नमस्कार, मैं राजीव। आज मैं मौजूद हूँ नोएडा में, और नोएडा में रेहाउ ने एक बेहतरीन एक्सपीरियंस सेंटर अभी ओपन किया है। रेहाउ, जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले 27 साल पहले रेहाउ इंडिया में एंट्री किया था। यूरोप का ब्रांड है और रेहाउ ने एजबैंड के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत इंडिया के मार्केट में किया था। धीरे धीरे आज इंटीरियर डेकोर सेगमेंट और फर्नीचर सॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी रेंज, जिसमें एक्रेलिक लैमिनेट, क्रिस्टल लैमिनेट, किचन की एक बहुत जो रेहाउ किचन का एक रेंज है। इसके बाद बहुत सारे डेकोर पैनल हैं, रोलर शटर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट की वैरायटी है जो आज रेहाउ के इस एक्सपीरियंस सेंटर में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले की गई है। और चलते हैं, देखते हैं। हेलो मनीष जी। वेलकम राजीव जी, वेलकम टू रेहाउ ऑफिस। थैंक यू। मनीष जी आज हमारे साथ मौजूद हैं रेहाउ के एक्सपीरियंस सेंटर में। जैसा आप लोग जानते हैं, मनीष जी इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट फर्नीचर सॉल्यूशन डिवीज़न के हैं और इनका एक लंबा अनुभव है। मनीष जी आपसे बात करेंगे। एक बेहतरीन एक्सपीरियंस सेंटर आपने खोला है। श्योर राजीव जी। इस जो एक्सपीरियंस सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? राजीव जी, हमारा रेहाउ के प्रोडक्ट्स हमने जब स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर 27 साल पहले, तो हमारा खाली एजबैंड था। एंड एजबैंड हम सिर्फ इंडस्ट्री को कैटर करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हमने बहुत सारे अपनी इंटरनेशनल रेंज इंट्रोड्यूस की है, इन टर्म्स ऑफ लैमिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ सॉलिड सरफेस, इन टर्म्स ऑफ फ्लोरिंग, रेहाउ किचन। मैं अभी आपको एक्सपीरियंस सेंटर में लेके चलता हूँ, सारा डिटेल में बताता हूँ। तो हम चाहते हैं कि कस्टमर यहाँ पर आए और रेहाउ के प्रोडक्ट्स टच एंड फील करे और अपने इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ भी आए एंड वो भी देखें कि रेहाउ क्या रेंज बेच रहा है इंडिया में। और एक बारी एप्लीकेशन के साथ अगर कस्टमर देखता है तो उसको ज़्यादा आइडिया आता है कि उसके घर में कैसी प्रोडक्ट्स लगेंगे। रेहाउ के प्रोडक्ट सारे लग्जरी होते हैं। Yes, REHAU stands for quality, and quality comes at a price. So that is why REHAU products are premium, and we always sell those products in it. REHAU offers complete range of component और complete kitchens as well. So राजीव जी, हमारा किचन के लिए हम अभी स्टार्ट किया है। We are starting from the down south. Okay. And we want to first try it in south and then we try to take it to pan India. So हम right from the initial designing stage to the installation, complete installation, we will give the customers the solution. तो एक बार थोड़ा सा जो भी किचन के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल आइए जी। So ये जो किचन है राजीव जी, ये हमारा acrylic 2 mm solid surface along with our range of सुपर मैट एंटी फिंगर बोर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हमारा टाई अप जो है वो ब्लूम और कैसे बूमर के साथ है फॉर द एक्सेसरीज एंड द हार्डवेयर। एंड फॉर अप्लायंसेस वी हैव सीमेंस, बॉश एंड हैफले। ओके। एक ये किचन है हमारा, छोटा सा हमने दिखाया है एक कॉन्सेप्ट। और फिर हमारे ये रेंज ऑफ रोलर शटर्स है विच आर स्पेस सेविंग सॉल्यूशंस इन किचन्स एंड स्पेशली इन एरियाज ऑफ बार्स वेयर दिस कैन बी पुट। So ये रोलर शटर की रेंज है हमारी फ्रॉम द लोवेस्ट इकोनॉमिकली प्राइस इजी लाइन विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड PVC. These are co-extruded roller shutters. So we give a warranty of 40,000 life cycle. Great. All our roller shutters have a warranty of 40,000 cycles. So this opening and closing is 1 cycle. Great. So if you take an average housewife, how many times they open, so it corresponds to 20 years in the kitchen. Very great. So this is our roller shutter. This is our range of glass roller shutter. This is 3 mm, we call it as Metroline, along with the metal aluminum tracks. Same 40,000 cycles is the solution for this. And this is our new range of matte roller shutters. We call it as Crystalline Neo. Great. So we have matte and gloss both, and it comes in 2 sizes, 600 width and 900 width. All the roller shutters comes in 600 and 900, and the height is 1500. So that from the counter of the kitchen to the top, it can be there, and all the appliances like microwave or toaster or mixer, if customer wants to kitchen में लगाना चाहता है तो वो दिखेगा नहीं। Great, बहुत बढ़िया। And this is our new introduction from Germany, which is called Noble Matte. This is anti-finger roller shutter. So we have in 5 colors.
So we have crystalline in 2 colors, we have Vetroline in 2 colors, we have Easy Line in 4 colors. So we have an entire solution of roller shutters with us. Great. So एक राजीव जी ये किचन है जी डिजाइनिंग के लिए, yes. और एक किचन आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है. यू कैन सी दिस इज एंटी फिंगर मेटालिक रेंज ऑफ बोर्ड्स Okay. along with the 2 colors, and this is another design where we have shown this at various price points. We want to show manual, automatic, with built-in appliances, hobs, chimney. Great. So these are the entire solutions, like various storage solutions we want to give it. So this is just the concept where customer can design and get the things executed as per their requirements. Our designers are there, they can make them the designs and get it executed. So various storage solutions are possible. Any load bearing things? How much So load? these are the standard fittings of Bloom and Cassette Boomer. They have different variants of from 40 kg to 75 kg draw runners. Okay. So it can be designed as per the customer specifications. Great. Minimum it will start from 12 lakhs onwards. Okay. 12 lakhs. So 12 lakh onwards, we are not selling kitchen less than 12 lakhs. So this is the range of our crystal deep boards. We have 7 colors. This Decorative boards. Yeah, decorative, anti-finger, metallic. Okay. You can see metal range of Base colors. is MDF or what? Base is MDF, Okay. and this comes as a finished board from Germany. Very great. We give solutions of board as well as the Edgeband. Okay. So these are 7 colors. So this we have launched called Crystal Deep colors. Crystal deep colors. So this is the new trend in the international This is market. Is anti-finger matte colors. Matte colors. All matte. All super. All range of matte, 7 colors, 7 pastel colors. So this is So in what sizes it's available? it is 2800 into 1300, so 2800 mm into 1300 mm. So 9.4 into 4.25 square feet. Yeah. So total is 39 square feet, one board. 39 square feet one board. So Great. it comes in E1 grade. Okay. So it is not E2 grade. It is one step ahead. So these are the initial launch is 7 colors. Okay. So we are going to expand the range. एक हमारा ये weaving material है. अच्छा. This is called for the outdoor furniture. We Okay. call it as a high density polyethylene. Okay. We have various shapes and sizes and colors. हम इसको इंडोनेशिया में बनाते हैं. अच्छा. 2 ब्रांड्स के नाम से आता है. जी. एक REHAU, एक वायरो. अच्छा. We are marketing both the brands in the international market. We are the world leaders in this material. Okay. So ये हम यहाँ पर फैब्रिकेटर्स को देते हैं और फैब्रिकेटर्स चेयर्स वीव करके फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर्स को देते हैं. तो इसका एप्लीकेशन एरिया क्या क्या है? All outdoor furniture. आउटडोर फर्नीचर. It is UV resistance, has a life, so it will color fade नहीं होगा, कटेगा नहीं, and it has got a stress resistance. आप बैठोगे तो आप उठोगे तो चेयर अपने आप ऊपर आ जाएगी. So this is a very good, very sturdy material in various shapes and sizes and various colors. गार्डन फर्नीचर जिसको बनाना है. गार्डन, आउटडोर, स्विमिंग पूल के पास, होटल्स के अंदर सारा ये प्रोजेक्ट्स के अंदर ये फर्नीचर जाता है. और इसमें कितने रेंज कलर हैं आपके? बहुत सारी रेंज है. और इसका साइजेस भी डिफरेंट, वेरियस थिकनेस, वेरियस शेप्स आर देयर. इसमें क्वालिटी का कोई गारंटी आप ऑफर करते हैं? कितने साल? जी करते हैं. 5 साल तक कोई कलर फेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसको. बहुत बढ़िया. ग्रेट. आप इसको पानी के अंदर रखिए, धूप में रखिए, जहाँ मर्जी रखिए, ये मटेरियल ऐसे कैसे रहेगा. बहुत बढ़िया. उसके बाद एक प्रोडक्ट है हमारा REHAU सॉलिड सरफेस, विच इज एक्रेलिक सॉलिड सरफेस. वी आर सेलिंग इन द नेम ऑफ मिनरल एंड मोनो एंड मार्मल हियर. द मिनरल रेंज इज बेंडेबल. वी हैव 6 mm and 12 mm. We have 25 colors. So this is a bendable material which is manufactured as per the international standards. And we have non-bendable also for the straight applications.
if in any cafeteria or any slab in hospitals, in hotels, in kitchens, whereas it is used in the other dry area, because kitchens के अंदर पहले ये प्रोडक्ट में दिक्कत थी, so अब किचन में क्वार्ट्स लेता है, but this can be used in other parts of the kitchen. For slab. In bathrooms, it is quite in airports, in railway stations, hotels, reception area. So countertop. lot of application is there. So architects are specifying these products for the various applications. बहुत सारे मूर्ति भी आजकल इंडिया में. मूर्तियाँ, हाँ, मंदिर की मूर्ति आजकल इसमें बनती है CNC के साथ. तो वो इस में पॉसिबल है. ये हमारे वेन कलर्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट वेन पैटर्न्स दिखेंगे. Apart from furniture, REHAU sells premium plumbing solutions also for the plumbing industry. So we have these are single pipe for hot and cold application. Jointless pipes are there. Noise-free pipes. So उसमें आएगा नहीं. This is called PEX pipes. So this is the premium plumbing solutions for the residents or any applications. This also we are selling. Great. Apart from plumbing, we have a product called underfloor heating and cooling system. This is the polymer flooring. Yes. We have got almost 15 colors in this, and it is 5 mm and 4 mm, two thicknesses, with a wear layer of 0.5 mm and 0.35 mm. So normally we are offering 10 years warranty for this product. So ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में यूज होगा? इंटीरियर के अंदर. इंटीरियर के अंदर. So हमने ये पूरी अपने शोरूम में भी सारे फ्लोरिंग किया है. So you can see from here to there, it is seamless. It is joint free, just a click system. Any carpenter can put it. Through click only. Through click only, or any surface. If you have tiles already on the in the house, it can be done on the tile. If you have a cement, then it can be done on the cement also. So it is a click system. Good. बहुत अच्छा. Come. So I will show you the range of edgebands, which is our major product. Yes. Our 65-70% turnovers comes from the edgeband. So REHAU is a world leader in the edgeband. So we have got various type of edgebands in various material. This is acrylic. This is हमारा acrylic with twin. So these get a real effect of the glass when it is put on the acrylic, you know. So this is the range. Then we have metal edgeband solutions in various colors, copper, silver, matte, you know. So these are there. Then we have our wood veneer edgebands. So अगर आप veneer के shutters बना रहे हैं तो एकदम इसको same machine के ऊपर ये veneer edgebands लग जाएंगे in various thicknesses, right from 22 mm to 55 to 100 mm also. We have got veneer solutions. Then we have got embossed. Various embossing patterns are the trend right now in the laminates. Yeah. So we have got a lot of embossing finish, same embossings as to the laminates. Then this is uni and plain colors, and this is decor. And then we have high gloss because of lot of PVC laminates or the high gloss HPL laminates. We have got matching high gloss. We are giving high gloss a gloss level of 85, and then almost super high gloss a gloss level of more than 97. Great. In super high gloss laminates. Then we have got laser edgeband in this is PVC range. We have got ABS also, which we are producing here in India. Okay. This is a much greener product. We have started ABS around 6-7 years back, but the demand is catching up now. The concept of sustainability, and because of international office players are like Hayward's, Technion, they have come to India and they are demanding these edgebands, so we are producing for them. Great. Then we have introduced a zero joint edgeband. This is called zero joint edgeband. With this, you have an inbuilt layer of glue at the back of the edgeband, and with hot air or laser in the machine, this can be applied and you will not see any joint. So it will have a complete 100% sealing of the joint.
So the main drawback of any edge bending, which is the glue line, can be taken care of this zero joint edge bands. So this is the product of the future. You started producing this zero joint also in Not yet, but we are getting it from our China plant and from Germany plant. But very soon we need just 6 months to get this production established here. So customers are now starting getting inquiries of the laser edge bending machines. Internationally, the entire industry is shifting to laser. In China, it is very popular. In Europe, it is the trend. In other parts, US, Russia, everywhere the laser has come. India will catch up very soon because Indian customers also need a very good product, going forward. Yeah. So, Manish, how many range you maintain in Edgeband? How many colors? Edgeband में राजीव जी हमारे पास 1500 कलर हैं. अरे ग्रेट. और इतनी थिकनेसेस हैं और हमारे पास टोटल अगर मैं कम्बिनेशन करूं तो 20 लाख SKUs हो जाते हैं. सिर्फ Edgeband में? सिर्फ Edgeband में 20 lakh SKUs we have in various type of finishes, various type of. In the world, you are the only company who maintains such a huge SKUs. Such a huge inventory, because Edgeband, if it is not maintained or matched, then it will not sell. So we have got 1400 plus colors here in India, and we have got matching with every major laminate players here in India. So our Edgebands are value for money. They are DOP free. We don't any harmful material is being used in our Edgeband. Then they are antifungal, antibacterial, and the major advantage of our Edgeband is they are UPVC Edgebands. These Edgebands we have launched around 8 years ago. So UPVC is unplasticized PVC. Okay. See, the advantage of this is when you have a plasticizer in the Edgeband, the plasticizer has a tendency to move. There are molecules which moves. Okay. When they move, there is a chance for Edgeband to delaminate. Because of वो glue के साथ board के साथ वो आ जाते हैं, तो chances that Edgeband can fall. Unplasticized means we have taken out the right amount of plasticizers from the Edgeband. Okay. So this problem is taken care of. So this is the technology which we have mastered over the years. So in India, the only company produce UPVC Edgeband? Yes, we are the only one having UPVC Edgebands with certificates here in India. Great. And now from last year, we have consolidated our production to have a better efficiency in one location, which is Vadodara, and now Vadodara is having 19 lines, Edgeband extrusion lines, which are totally automated lines. Rajeev ji, ये हमारी range है for the surface material. So REHAU decided to enter into the premium surface material with our acrylic laminates. Okay. In 2014 from Germany, and then we expanded our range over the period of years. And now we have a lot of variation and colors in the surface industry, which we are offering to the kitchen industry, to the interior industry, to the architects, and to the house owners. Ultimately, these are the laminates. This is the boards. We are giving the boards plus laminates. So this is the range of radiant, high gloss, and super matte. Okay. Super matte boards. The boards with MDF or this is on HDHMR. HDHMR. We high density MDF. High density, high moisture resistance MDF over this. So we have got decor patterns. We have got plain colors. So this is the range of our matte surface and gloss surface. And here is the range of our laminates. Start with our laminate is Ace. This is a premium laminate, which is anti-finger, has got anti-finger properties, also thermal healing properties. These are HPL. This is HPL. Okay. This is high pressure laminate, 1 mm thick, with the anti-finger as well as thermal healing properties. Okay. अगर कोई scratch इस पे आ जाए, micro scratches. Thermal healing थोड़ा सा explain कीजिए. Thermal healing का ये है कि इसके ऊपर coating है. Okay. हैं, और उससे क्या होता है कि अगर आपके ओवर पीरियड ऑफ इयर्स अगर आपका सरफेस में कुछ स्क्रैचेज आ जाते हैं तो आप एक कपड़ा रख के उसके ऊपर आयरन लगाएंगे तो वो स्क्रैचेस चले जाएंगे. दे सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज है इसकी. इसमें कितने रेंज है? 15 कलर्स की रेंज है. सो देन कमिंग टू द एक्रेलिक नेक्स्ट, विच इज द रियल को एक्सट्रूडेड एक्रेलिक. ओके. PMMA एंड
the ABS are extruded jointly and then produced with matte and high gloss surface. These are the acrylics. So जो market में look like laminates हैं, which are coming from various Asian countries, those laminates, what is there? They paste a film at the back of the clear acrylic. Okay, right. तो उसमें क्या होता है कि there are various disadvantages. Like वो पीला पड़ जाता है, कई बार फिल्म निकल आती है, कई बार फिल्म के पीछे डिजाइन चेंज हो जाता है. सो दोज एडवांटेजेस आर टेकन केयर ऑफ. इसमें अगर आप ब्लेड से निकालेंगे भी तो इट विल कम एज अ सिंगल पीस. सो दीज आर रियल ABS एक्सट्रूडेड विद एक्रेलिक. सो टॉप लेयर एक्रेलिक की है, उसके पीछे ABS की लेयर है. सो दिस इज द रेंज. Which thickness? This is 1 mm. 1 mm. 1 mm and 0.7. 0.7 is for the flat lamination जो हम बोर्ड्स में लगाते हैं. और 1 mm हम एज ए लैमिनेट देते हैं जो कारपेंटर भी अपना लगा सकते हैं. तो उससे क्या है कि अंडुलेशन. 0.7 is for OEM. 0.7 is for the boards which we press it and then give solution as a board and we sell as a laminate also. So we have got both lacquered and unlacquered material also. So lacquered material means it has got a scratch resistance of more than 1.5 mm Newton per square meter. Good, great, wonderful product. This is 1 mm. This is our range of 2 mm. So इससे क्या होता है कि 2 mm, if you feel it, touch and feel it, it gives you as a solution for the glass. So it looks like a glass is there on the board or at the, you can use it for the cladding also. It is 40% lighter than the glass and gives you the same amount of gloss levels and the properties and can be, you know, इसके पीछे आप लाइट भी लगा सकते हो ग्रूव करके, इसको आप राउट भी कर सकते हो, वेरियस शेप भी दे सकते हो. दिस इज एक्रेलिक शीट 2 mm. इसका एप्लीकेशन कोई और एप्लीकेशन बहुत सी एप्लीकेशन है. वार्डरोब्स के अंदर, किचन के अंदर, वेरियस लेवल में आप लगा सकते हैं. पैनलिंग में भी, केबिन पैनलिंग में भी लगा सकते हैं इसको. और इसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जैसे मर्जी लगाइए. तो दिस इज आवर 2 mm एक्रेलिक क्रिस्टल. वी हैव जैसे ग्लास एप्लीकेशन है एल्युमिनियम फ्रेम में. हाँ, एल्युमिनियम फ्रेम में इसको लगा सकते हैं. हाँ, इसको इसके हमारे पास मैट भी आता है और ग्लॉस लेवल्स भी हैं, दोनों हैं. और हम इसके साथ मैचिंग एक्रेलिक एजबैंड भी देते हैं मैट एंड हाई ग्लॉस के अंदर. और इसकी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेंज है दैट इज क्रिस्टल डेकोर, वेयर वी हैव डेकोर पैटर्न्स available. This comes as a finished board from the Germany. Okay. So this is again a bigger size, which is not 8x4, 9.4 into 4.25, so 39 square feet, along with the matching acrylic edgebands. So this is a super premium product. Can be used as a highlighter. You can use it as a highlighter with 2 mm, you know, and in various applications like wardrobes, in the premium segment, you can use it. Great, Manish ji, many congratulations, and it was wonderful experience with you for walk through the showroom. Just 1-2 questions related to the this experience center. Manish ji, earlier your office located in Delhi, now you shifted to Noida. So हमारा पहले कीर्ति नगर में ऑफिस था, जिसमें हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस सेंटर था और ऑफिस भी छोटा था. ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स हमारा स्टाफ भी ग्रो किया है, हम भी ग्रो किए हैं. सो वी थॉट ऑफ ए नीड वेयर वी कैन शो द कस्टमर्स द all the range of our products are also grown over the years. So इसलिए हमने नोएडा में ये D&D के साथ ही लिया है ये शोरूम. So where the convenience is also there and the architects, mostly interior designers, they are from the South Delhi, so they can come across easily. It has got a parking space. एक्सपीरियंस सेंटर मीन्स हमने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया है और कुछ एप्लीकेशंस भी दिखाई हैं कि यहाँ पर कैसे इसको लगाना है. तो उसके बाद फिर हम इसमें वेरियस सेशंस करेंगे जिसमें हम इंटीरियर्स, आर्किटेक्ट्स, स्टूडेंट्स एंड कस्टमर्स, हमारे डीलर्स भी अपने कस्टमर्स यहाँ भेजेंगे, उन सबको बताएंगे. हमने डेडिकेटेड एक रिसोर्स हायर किया है जो कि उनको ट्रेनिंग देगा, उनके यूएसपी बताएगा, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बताएगा. So we have kept a mini conference
meeting room where all the samples are there. Customer can touch and feel the come and can discuss with our technical people, trained people, what is the application, how to use them, how to use in their interiors, all the products. So राजीव जी ये है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा हमने जैसे एक एप्लीकेशन दिखाई है सॉलिड सरफेस की, ये एप्लीकेशन है. सो इट इज़ बेंडेबल. आप देखिए ये पूरा सीमलेस है. सो दिस इज हाउ आवर सॉलिड सरफेस इज. मतलब मनीष जी, इस एक्सपीरियंस सेंटर में आने के बाद लोगों को अपने बाइंग डिसीजन में काफ़ी इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी. प्रोडक्ट की एप्लीकेशन देखेगी, बिग साइज देखेंगे, सैंपल्स मिलेंगे, उनके जो सवाल हैं वो आंसर होंगे. और अगर वो अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ आना चाहते हैं तो वो दे आर मोस्ट वेलकम. सो अपार्ट फ्रॉम, जैसे हमारे एक प्रोडक्ट हैं हमारे जो इसके साथ एजबैंड के साथ जो हम इंडस्ट्री को देते हैं, जो किचन इंडस्ट्री और दी OEMs, हमारी रेंज ऑफ एडेसिव्स है एजबैंड के साथ. सो वी आर गिविंग कंप्लीट सोल्यूशन, हॉट मेल्ट एंड कोल्ड एडेसिव्स आल्सो फॉर द OEMs, एंड दीज आर आवर प्रोडक्ट्स फॉर द किचन, लेग्स एंड द प्लिंथ कवर, स्कर्टिंग जिसको कहते हैं. सो ये भी हम इंडिया में बनाते हैं. अच्छा. वेरियस लेंथ. सो ये किचन इंडस्ट्री के लिए लोग यूज करते हैं. और एडेसिव आप रिटेल में भी देते हैं या किचन? एडेसिव हम जो रिटेल में देते हैं, बट मोस्टली हमारा OEMs के लिए ज़्यादा है. रिटेल हॉट मेल्ट या नॉर्मल एडेसिव दोनों है? नॉर्मल कोल्ड एडेसिव एंड हॉट मेल्ट OEM के लिए है. और हमारा जो रिटेल में एडेसिव बिकता है वो हमारा PVC टू वुड, जैसे एजबैंड को हाथ से लगाने के लिए एडेसिव चाहिए होता है, तो वो हमारा ये पॉलीमास्टर है. ये रेंज हमारी उसके साथ जाती है. तो कारपेंटर ये लेता है, एजबैंड के पीछे एडेसिव लगाता है, उसको चिपका देता है. सो ये है. तो आज रेहाउ एक्सपीरियंस सेंटर का इनॉग्रेशन है और बहुत सारे लोग आकर के आज इस शोरूम को देखेंगे, विजिट करेंगे. इस शो में हमने प्रयास किया कि इस मनीष जी के साथ थोड़ा ब्रीफ में समझें. जितने भी हमारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप ज़रूर नोएडा के सेक्टर 4 में, मनीष जी ना, सेक्टर 4 B7, हाँ B7 सेक्टर 4, अमलताज मार्ग, ऑपोजिट इलेक्ट्रिसिटी सेंटर. बहुत ही इजी रीच है. इजी DND से जस्ट क्रॉस करेंगे 500 मीटर पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये ऑफिस. हाँ, बहुत ही इजी है. आप पहुंचिए, रेहाउ का जो वेबसाइट है उस पे जाइए, उससे एड्रेस पता कीजिए. गूगल मैप में भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं रेहाउ के इस एक्सपीरियंस सेंटर को. मनीष जी, इसके अलावा भी इंडिया में और भी इस तरीके का एक्सपीरियंस सेंटर खोला है? हम अब इसको, हमारे पास बेंगलोर में ऑलरेडी एक्सपीरियंस सेंटर है, दिल्ली में अभी हमने खोला है. अब हमारा प्लान है बॉम्बे में खोलने का. सो नेक्स्ट ईयर हम बॉम्बे में एक्सपीरियंस सेंटर खोलेंगे. उसके बाद हम वेरियस सिटीज़ के अंदर एज ए फ्रेंचाइजी ये एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलेंगे ऑन दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट. बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया मनीष जी, आपको कंग्रेचुलेशंस और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आज हम फिर देखेंगे एक बहुत ही सुंदर नॉलेज बेस्ड सेशन होगा फर्नीचर इंडस्ट्री पे, जिसमें आर्किटेक्ट्स, OEM, रिटेलर के साथ साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग भी साथ होंगे. और उस सेशन को मॉडरेट करेंगे मिस्टर प्रगत द्विवेदी, फाउंडर प्लाई रिपोर्टर मैगजीन.
So friends, after today's so far, you have seen how the entire REHAU India's showroom has been inaugurated. You have taken a tour, and today we have eminent guests, and I am thankful to REHAU. They have invited कि एक knowledge session जरूर करें जिसमें what REHAU is doing, how they are doing, and how they are going to grow in Indian market. Let's talk about the relevance of REHAU products in Indian furniture and interior sector. So whole topic is today 30 minutes for your knowledge, and your knowledge is very important for your own growth. The moment you try कि कैसे 21वीं सदी में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हमारा देश पूरे विश्व में 7% की ग्रोथ जीडीपी की अभी कल ही आरबीआई ने बताई, और उस 7% में आपकी हिस्सेदारी कितनी है, अगर उसे टारगेट करना है, नॉलेज बिना तो नहीं हो सकता. और नॉलेज का मतलब बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जब भी हम जानने जाते हैं तो इनोवेशन पर आता है. और इनोवेशन में मैं समझता हूं REHAU हैज बीन डूइंग फैंटास्टिकली वेल इन लास्ट 27 years. आई नो दिस कंपनी व्हेन इट वाज अनवील्ड एंड ब्रॉट इन इंडिया. टुडे वी हैव एशिया पैसिफिक हेड Mr. Rafael, then we have Managing Director from REHAU, Mr. Faiz, then we have Vice President Sales REHAU India, Mr. Manish Arora, and then we have Bhawna Singh. She is from RSP Design Interior, and she will be talking about many of the interior trends and how REHAU is relevant. We also have Mr. Ashish Kakar, who is from Harmony Systems. He is an OEM and longest running, very long association goes with REHAU. And then we have Mr. Suresh Goyal, who is also from our trade community, USP Enterprises, Delhi. And all these people are very important stakeholders in Indian interior market. आज हम सुनेंगे सबसे, और आप सभी को ये जरूर कहना चाहूँगा, ग्रांटेड कभी नहीं लेना चाहिए. नॉलेज हमेशा समय देने से आता है. धंधा रोज करते हो, दुकान पे बैठे हो, या आप फर्नीचर बनाते हो, या आप आर्किटेक्ट हो, नॉलेज अगर फ्री की हो, स्पेशली लाइव हो, पकड़ के रखना. भले कोई भी काम करो, सुनते जरूर रहो, और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगे या बहुत अच्छी लगे तो कमेंट में कुछ लिखना. एंड आई आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन विद मिस्टर राफेल. सर, वेलकम टू इंडिया, and you have made a fantastic showroom. Congratulations, as we have seen your tour today. How do you see the market now? Because in global market we see a lot of ups and downs, and you are seeing entire globe also, and very particularly you are monitoring Asia Pacific being head. So how do you see the market growing from here for Indian market particularly, and how do you see global scenario? Okay, first of all, thanks that we can be in your fantastic show, and the compliments you just gave, I can only forward to my fantastic Indian team who are doing here a great job. To your question, I think there is a time before COVID and a time after COVID, and many regions and countries are still struggling to get out of this post-COVID drama. And if you ask me, there are some areas in the world who deal better and some who are not dealing so well. For me, India, I have to say that very honestly, not that I'm today in India, but I really mean it. India is one of the countries that is doing best after COVID. You asked about where is really growth and attractiveness given. I always assess markets in the following way. What is the size? What is the growth? What is the number of competitors? Okay. We have to look at that. Yeah. We as a company have to look also at the market price that is given. And then for me and for us, very important is how is the readiness for innovation and the readiness for quality. And I would give India of everything a tick. There's only maybe one point where I would say there is room for improvement, and this is the mindset for more quality. Yes, of course. And therefore, as we are quality orientated producers, we would love that India would go then even more for quality. But if you asked me the question before, if you would
would ask me where would I invest today, Yeah. I would invest today in India, Why? because Yeah. there is the size of the market, 1.4 billion people, the largest population. There is growth. If you look outside at the streets, you see so many construction happening. There is growth. देख लो सर सब लोग, कई बार हम लोग बोलते हैं ग्रोथ है, यहाँ है, लोग जा जाके दुबई में पैसे लगा रहे हैं, भाई इंडिया में आओ देखो बाहर से आ रहे हैं. सो मिस्टर रफेल, व्हेन यू से दैट इंडिया यू विल इन्वेस्ट बिकॉज सो मेनी पीपल एंड everywhere construction is growing. Yeah. So tell me, will you invest in industry or I mean real estate? Well, I would say I would invest in the moment in industry because there is such a huge demand that still needs to be covered. But real estate, I am not a professional person who can judge that. But when I see all these attractive, very attractive apartments, bungalows, which are right now coming up in India, I would say also the real estate market is really interesting and not too hot. There are other areas in the world where I would say keep the fingers away. So far, to simplify, मैंने सवाल पूछा इंडिया का मार्केट है कैसा, ग्लोबल मार्केट के विद रिस्पेक्ट आप इंडिया के मार्केट को कैसा देखते हैं, और मिस्टर रफेल ने जवाब दिया कि व्हाट आई सी इंडिया होल्ड्स इमेंस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आफ्टर कोविड इंडिया परफॉर्म एक्सीलेंटली वेल. वेरी फ्यू ऑफ द कंट्रीज, प्रोबेबली ही नेम्ड 1 or 2 और मैक्सिमम 3 जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि शायद अगर उन्हें इन्वेस्ट करने का मौका मिले ही विल चूज इंडिया एंड ही विल चूज इंडस्ट्री फर्स्ट बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन इट. एंड आई से आपने तो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया ही है आपकी कंपनी ने, यू आर गोइंग बिग इन इंडिया. सो व्हाट इज योर इंडिया प्लान्स टुडे फॉर रेहाउ? Well, we have the perspective that India has to be within the revenue of the REHAU group in the next 5 years in the top countries where REHAU is doing business. And this means, of course, that is a tough job for our local team. It's also that we need to invest. And we did some first steps. Faiz will tell you later. For REHAU, India is becoming, or it has already become, top 5 priority in their revenue contribution. In global arena, India is now a priority for REHAU, and I'll definitely ask Manish ji. Yes. Welcome to this program. Thank you. Manish ji is very experienced. We all know Mr. Manish from so long. आपकी कंट्रीब्यूशन और आपकी मेहनत हमें कई जगह OEMs में, फर्नीचर मार्केट्स में और ट्रेड में दिखाई देती है. मनीष जी, आप बहुत दौड़ते भी हैं और बहुत बातें भी करते हैं सबसे, ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? जी मेरा आई थिंक मेरा स्वभाव है कि आई लव टू बी इन द फील्ड, ऑलवेज इन द मार्केट वेयर द एक्शन इज विद द कस्टमर्स एंड स्पेशली डिस्कसिंग नॉट अबाउट व्हाट रेहाउ हैज टू ऑफर, व्हाट दे नीड and ask them whether how we can fulfill their needs. So that is the job also for me and I love my job. एक सवाल मैं आपसे बिल्कुल अभी के कन्वर्जेशन से निकला है, मैंने जानबूझ के वो छोड़ा था. सर ने कहा इंडिया हैज स्टिल रूम फॉर क्वालिटी. Yes. नाउ आप इतना घूमते हो बाजार में, क्या इंडिया में सच में क्वालिटी का अभाव है? बिल्कुल है जी. इंडियन कस्टमर व्हाट आई सी इज the most difficult customer. इंडियन कस्टमर मोस्ट डिफिकल्ट है, Most difficult customer. तभी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बना है. हाँ, तभी बना है. And they have value for money. Yes. The mindset of the Indians, we are best quality at the lowest price. Are you able to justify with REHAU products here? Yes, because if you are able to convince the customer that the quality what we are offering is at the right price, then customer is ready to pay. But you have to tell him the benefits of your products over the competition and what value these benefits over the years will like to contribute in his interiors. There are products which can run for 3-4 years and then customer has to change it, and there are products which can run for 15 years, and that kind of value and quality we are offering and that is what the customer pays for. तो REHAU तो एक
बकेट लेके आया है कि पूरा प्रोडक्ट कैटेगरी है. अर्लियर वी यूज टू नो फॉर एजबैंड, धीरे धीरे हम उसमें सॉलिड सरफेस, फिर एक्रिलिक बोर्ड्स, लैमिनेट्स, रोलर शटर्स, मेनी प्रोडक्ट्स यू लॉन्च्ड, बट स्टिल रेहाउ फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज एजबैंड. एजबैंड में क्वालिटी कहाँ पर आपको दिखती है कि आप डिफरेंट है? बहुत सारी कंपनियां आई, 100 कंपनीज मे बी नाउ टुडे. प्रवीण, मैं पहले भी मैंने बोला है, एजबैंड मॉड्यूलर फर्नीचर का एक इंटीग्रल पार्ट है. बिल्कुल है. बिकॉज अगर आपका सरफेस को, अगर उसको साइड्स को मैच करना है तो दैट इज द एजबैंड, एंड सरफेस को सील करना दैट इज आल्सो द जॉब ऑफ द एजबैंड ओनली. एस्थेटिक भी और फंक्शनैलिटी भी. फंक्शनैलिटी ऑफ द फर्नीचर कम्स फ्रॉम द हार्डवेयर, whereas look of the furniture comes from the surface. Aesthetics. And that surface is very important. And I always say, edgeband is the heart of the furniture because side से वही दिखता है. Because side से वो दिखता है, and because if your edgeband is not properly put on the edgeband, there are chances of swelling the board and the entire furniture will go. Because lot of people, the trend is now coming to the modular boards like MDF, HDF, particle board. So more and more people are shifting towards these value-added boards rather than scarcity of wood, And for these boards to perform better, edgeband is a very integral part of the furniture. So I think REHAU is approaching 500 crores revenue in probably as far as my knowledge is concerned. तो इसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी ट्रेड के लिए, लोगों के लिए, फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए कौन से प्रोडक्ट में देख रहे हैं? As I said, that Indian furniture industry is growing very fast. The India as economy, as you have said, is growing by 7%, and according to the report, the furniture industry is growing by 12 to 13%. And edgeband, because of the acceptability in last few years, 16 to 17% has grown more. Yeah, maybe 18%. 18%, and in retail, maybe much more, because retail is the area where still in the Indian furniture industry, 60 to 65% is contributed by the carpenters. Very correct. And these carpenters are the backbone of the Indian furniture industry. And every house in India is non-standard. And because of that, carpenter is very important part. And people like to use those carpenters, and that is the market for future. And every carpenter now has accepted the product like edgeband. They are putting edgeband by hand. And that is the area where we would like to further invest and further grow. I think Faiz will tell you. REHAU has also invested in a company, right? Acquiring a company. Mr. Faiz, he is managing director of REHAU India, and I will ask a few crisp questions. Sir, we have heard that REHAU has acquired. The news is there. We have also floated, so it is now confirmed. Why REHAU has acquired a company in South? Or why not West? Why not North? Okay, so yeah, I can say proudly say that we have completed the acquisition of Red Star. हमने कल प्रेस रिलीज किया था जहाँ पे हमने अनाउंस किया कि रेड स्टार का एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है, एंड हमने मेजॉरिटी स्टेक लिया है. 2 साल में उसका 100% एक्विजिशन कंप्लीट होगा. The reason why we have done this acquisition is South. We have a plant in the west part of India. Okay. We already have. Pune plant. We have in Vadodara. Sorry. And we are expanding actually like Center of Excellence Vadodara का बनाया है. वहाँ पे डिज़ाइन सेंटर बनाया है हम लोग ने एजबैंड का, which is I think first in India. And the reason why we have done this acquisition is South. We want to improve our time to the market, ताकि कस्टमर को टाइम पे माल मिले, जल्दी माल मिले, rather than वेस्ट से जाने का. तो हमारा फ्यूचर में भी लाइक व्हाट राफेल सेड कि वी विल इन्वेस्ट इन इंडिया, हम लोग फ्यूचर में भी जब इन्वेस्ट करेंगे वी वांट टू इम्प्रूव द टाइम टू द मार्केट, ताकि जितने जल्दी हम लोग कस्टमर के पास में माल पहुंचा सके वो फोकस रहेगा. एंड वाई रेड स्टार, आई वुड से कि क्वालिटी प्रोडक्ट है, वी आर क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी, एंड दैट इज़ वाई वी हैव चोजन एक्चुअली रेड स्टार. जब कोई नंबर से जुड़ा होता है और जब कोई 20 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल होता है और जब वो इस सीट पे बैठा होता है तो वो हमेशा शायद बहुत सोच समझ के सही फैसलों की तरफ बढ़ता है. एक बात साफ है, सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेकोर प्रोडक्ट. एजबैंड इज़ नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री. यू हैव टू सर्व. सो प्रोबेबली REHAU हैज़ एक्वायर्ड a company in South that is named as Red Star with its brand because they can cater to entire southern markets, and being Red Star, a good quality product, it goes in sync with the principles of REHAU, and hence today I congratulate all the REHAU team for
adding another feather, adding your expansion plans and a capacity. So how much? एक और point. Yeah, please. Yeah. So जैसे आप I think more trade people है, हमारा रेड स्टार का एक्विजिशन का एक और मेन रीजन ये था कि वी वांट टू फोकस मोर ऑन ट्रेड एंड टियर 2 टियर 3 मार्केट के अंदर हम लोग रेहाउ एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं. वी आर ऑलरेडी स्ट्रांग इन द टॉप पिरामिड सेगमेंट, सो वी वांट टू फोकस ऑन द अदर सेगमेंट एज वेल, एंड दैट इज व्हाई रेड स्टार इज इंपॉर्टेंट. कि हम ट्रेड में फोकस कर सके, मार्केट में रिटेल मार्केट में फोकस कर सके. दैट इज जैसा मिस्टर फैज ने कहा, ट्रेड का मतलब है कि आज भी, मनीष जी ने भी सेम बात कही, आज भी व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इंटीरियर कंजम्पशन प्रैक्टिसेस, देयर इज इमेंस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट देयर. हेंस रेडीमेड फर्नीचर के साथ अभी भी इंटीरियर की खपत बहुत ज्यादा है. और हमारे आंकड़े भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स रिसर्च एंड मार्केट पेनिट्रेटेड फील्ड रिसर्च. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्टिल the direct OEM billing is hardly 20 to 25% for any product. It's trade that drives the product. 80 से 85% अभी भी entire product basket में billing goes through the trade and hence trade becomes important. And trade के सामने दो मुश्किल सवाल खड़े होते हैं कि trade OEM को कैटर करे, कारपेंटर को कैटर करे या क्या करे. और मैं आज के इस सेशन से ये बात समझ पा रहा हूं कि इस लॉजिक को रेहाउ इंडिया भी समझ रहा है कि ट्रेड नीड टू बी गिवन इंपॉर्टेंस. दे हैव अ डिफरेंट कैटेगरी एंड ट्रेड ओनली कैन पेनेट्रेट इनटू डीपर रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स, जिसकी वजह से रेड स्टार एक्विजिशन हैज बिकम वेरी वाइटल. राइट सर? Anything that any of you would like to add, because after this we will go to the other side of the panel, and anything that you have missed upon? Well, I would say I mentioned before the topic of innovation. Yeah. Right now, India is still a purely PVC country, and we believe, at least for Edgeband, it is time now to grow the next step, to do the next step, and use also other materials. ये बात सही है. We see ABS as a very important future material, and I would like to mention here also the potential of laser edgeband, which is exactly what Manish said, so important to give more quality to the entire furniture. So if you ask me, ABS and laser edgeband will be one or the two main drivers in the future. For PVC and edgeband product behavior, India has been now adopting a lot of edgeband application. Last 20 years has been focusing on कि edgeband ले या bidding लगाए. आप सभी ने देखा होगा, पहले bidding बिकती थी लकड़ी की, धीरे धीरे लोग उसमें बहुत सारे अलग तरीके के मटेरियल आने लगे और डिसरप्टर बना edgeband. Thanks to REHAU, the education became big, followed by many other brands, but the market is now close to 3,000 crores of edgeband, and I believe it will keep on growing with 15 to 18% year on year. लेकिन इस एजबैंड मार्केट में सब कुछ पीवीसी बेस है, ऐसा मिस्टर राफेल कहते हैं. और अगर उस पीवीसी के मार्केट में एबीएस और लेजर एजबैंड को भी जगह मिले, वैल्यू एडिशन, नॉट ओनली वैल्यू एडिशन बट एस्थेटिकल डिफरेंस विल कम. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज उन शोरूम वालों के लिए है जो लैमिनेट और एक्रिलिक शीट्स बेचते हैं. सर, आपसे भी अनुरोध है, क्या एबीएस है, क्या लेजर है, क्या डिफरेंस है? सरफेस तो आप बता रहे हो, साइड का भी बताओ. एक्रिलिक का एजबैंड मैं देख रहा हूं कि आप लोग इंपोर्ट करके सेल कर रहे हो, बट इज इट रियली एक्रिलिक? आर यू यूजिंग एबीएस? Stay tuned for PLY Reporter next session on what is ABS, what is laser, and how it is different from PVC. And I'll definitely host that show. I will come to Bhawna ji. Bhawna ji, as I introduced, she is RSP Design. It's a known firm in architecture and design. She is heading interior department for many projects, right, ma'am? आपसे हिंदी में एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि नॉलेज बहुत सारे लोग हमारे इंग्लिश में है. Ma'am, do you see relevance in Edgeband? Yes. For particularly interior space, and how you see REHAU offerings? See, as I said, as you said correctly, that people they know about the surface, but they don't see the 360 valuation of the whole product. So Edgeband is something like, it was an ignored kind of a thing. People used to select, like in our industry only, I have seen that people selecting the laminate, but nobody was worried about the edgeband. And edgeband is something which used to complete it. So
it was a lack of the knowledge, like, you know, what kind of a product is available in market, and then, the research and, like, you know, the marketing, and with all those things, with time, we understood, like, you know, what is the use of Edgeband, particularly for the furniture market. And then, as he rightly said, that, you know, research is going on, they are going ahead with, like, you know, other things as well, other materials are also coming up. I would say that, it's a good thing for us. And when we talk about furniture, when we talk about any product, the product is not about, like, what has been installed. We are also concerned, like, you know, as RSP, we are into sustainable designing, sustainable, like, you know, use of the material, sustainable kind of a thing. So we are also concerned what will happen to that material when it is go into, into the landfill, whether it is recyclable or not. बहुत valid point है, but PVC Edgeband, what kind of edges it has on other, like, you know, the wooden beading, which was, like, you know, our traditional item. That was recyclable. Yes, that was recyclable. But whether PVC Edgeband is recyclable 100%, 75%, that is actually important for us to know, because a product is. सवाल आपसे है सर, is PVC recyclable or is ABS? Mr. Rafael, can you answer this? Well, I would say PVC is definitely a more critical material. Therefore, we are using UPVC, which is the better PVC already in regard of sustainability. And of course, more green, more sustainable would be an ABS Edgeband. And this is also why we are convinced that we will, to a certain extent, try to educate the Indian market going into these more green solutions. As Mr. Rafael said, and as she has added, Bhawna ji, that apart from innovation, we have to look for sustainable material, and she expects that REHAU must bring something if they have not, and if they have already brought it, most welcome, right? One more question. Do you expect a material company, like REHAU is a material and innovation company broadly, do you expect they should be bringing more frequent product, or they should be sustaining these products and maturing them? बड़ा tricky सवाल है. See, I'm not from a marketing team or from the. नहीं, requirement, designer requirement. I understand. Yeah. So, as I said, it's not about the quantity, it's about the quality. So when PVC Edgeband, so the first name that comes into our mind is REHAU, and with REHAU I have seen that the kind of colors they have brought, the kind of textures they have brought, how, like, in last 10-12 years they have brought up the quality. It has evolved. The kind of offerings they have. When we talk about shutters, the first thing that comes in our mind is REHAU, because that is the first thing that we had used. And but it's not just that what they are offering, it's about the quality also. So for any vendor, for any like, manufacturing division, anyone, like, to their competitors also, anybody who they ask me, I always say, maintain the quality of the product that you are offering. Let us also absorb it. Let your consumer tell you, like, whether it is good for 3 years, whether it is good for 5 years. So it is a long run item. And having said that, I don't deny that they should not venture into other products as well, because as we all know, India is a vast market. It's for it's for a middle class person to for a lower income person to middle class to the luxury residences or luxury properties. So and every project needs different kind of materials. So from edgebands to shutters, now they are into PVC laminate, into vinyl flooring. So the more the offerings are, the more with value added qualities, not just the product, but it has to have some values. So when it is there, it's good for us, because there we can expect more quality, we can expect more competition, and then we have diverse product to actually dive into and see how we could use it creatively in our projects. Very honest answer. I must say thanks for straightforward answer. भावना जी ने कहा कि इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, नए प्रोडक्ट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नए प्रोडक्ट लाने के साथ साथ सबसे पहले उसकी मेच्योरिटी ऑफ क्वालिटी को जरूर मेंटेन रखें, क्योंकि बीइंग अ डिज़ाइनर दे वुड लाइक टू यूज़ मेच्योर प्रोडक्ट जो क्वालिटी में कंसिस्टेंट हो, ना कि खाली डिज़ाइन दिखाते जाओ, नए नए लेते जाओ, पीछे से क्वालिटी खराब करते जाओ. और इंडिया बीइंग ए प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बिकॉज वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, बिकॉज वी हैव लो पर कैपिटा इनकम, सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि इसमें बैलेंस कैसे बनाए रखें, और इसकी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ट्रेड के ऊपर है, जो हमारे ऑडियंस हैं। ट्रेड को ये समझना ही होगा, रेट के आगे क्वालिटी, जो हमारे ट्रेड के कई भाई समझते हैं। और जैसा हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं, इनोवेशन के साथ रेट तो चाहिए, लेकिन यार क्वालिटी की कंसिस्टेंसी दोस्तों जरूर चाहिए। एंड दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड बाय द डिजाइनर। मींस इफ यू आर विलिंग टू ग्रो, यू हैव टू सेल, वेदर वो बिकता हो या नहीं, आपको बेचने की कोशिश करनी होगी उन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जो डिजाइनर कम्युनिटी भी प्रेफर करती है और एक्सेप्ट करती है। Being a designer, you have seen the showroom also. Yes. What is your view upon whether really designers need display showrooms, or they are knowledgeable enough to see the sample and go ahead? Okay, I'll start with congratulating to the entire team of REHAU, all the people associated with them for coming up with this idea of having an experience center. See, as a designer, I won't say that we are highly busy guys, but we do have, like, time limits. We just can't go through, we just see the material. Okay, and I would say having an experience center where you can actually see the application and then you can assert the pros and cons. Okay, there you see how a particular material could be used in a different way, and what will be the joints. People just see, as I said, we most of us, they just not most of us, even the end users, they know that okay, there is a laminate, but what will be the joints of the same? So that thing is really important, and that this experience center is actually offering me like how the end product will look like if I'm going to use it for my kitchen or for my table surface or for any other application. I can see that okay, what will be the quality, what will be the look and feel, and what will be the, like, the edges, the joints and everything. And there I can even ask the question, look, okay, if I want to use it in a different way, because seeing is not the only thing, you have to cross question, like, because knowledge is important. Knowledge of the material. Knowledge is the new currency, we keep on saying this. Yes, and knowledge is the one thing which actually helps you to grow. Okay, so when, as I said, that when you're this showroom is adding up to whole thing. Yes, it is, because we as a designer is also, we are not the gods actually. The customer need to understand. When the customer will come here and they will see, as a designer, we understand the things, we understand so many things, but the customer, they need to have that kind of a knowledge. And as we all know, India is very emotional about investing. We are very emotional. Be it our first house, be it our first car, be it our first watch, we are very emotional when we are investing, because we think for 10 years down the line, how I'm going to maintain this. So an experience center like वो this, feeling आनी ही पड़ेगी शोरूम में. वो feeling, when you see the end product, then only you can get it. That's 32 inches TV can't, or the small brochure, it can't do justice to that. Thanks, Bhawna. Thanks very much. Can I add here something? Please. Thank you very much for this strong voting. We as REHAU, and I am personally absolutely convinced that showrooms are important. Because why? The end consumer want to touch, he and she want to feel, he and she want to smell, and only in a showroom where then you can see what possibilities you have with all our materials, and touch, feel, smell, you will get a feeling what you get from the material. And one last thing I have to say, at least in Europe, the decision maker, the final decision maker who use which material will be used are the ladies. So therefore, we particularly also took care to make a warm feeling that especially ladies are feeling comfortable here, because they are the ones who decide if they will use a REHAU material or not. India is same like Europe. There they decide, here they rule and decide. Sorry, not hurting any sentiments, just on lighter note. In India or abroad, it is design which need to be experienced and felt, because you create a dream home, you invest a lot, your hard earned money, और इसको सही में वैल्यू देने के लिए शोरूम की जरूरत पड़ती है. रेहाउ ने 2 एक्सपीरियंस सेंटर बनाए हैं. इसमें आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एक फर्नीचर मेकर हो, उसको भी आजकल हम बहुत सारे फर्नीचर फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, और वहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि पहले एक एजबैंड, थ्रू फीट, बीम सॉ सब लगा के एक तरफ चट्टे लग जाते थे, एक तरफ पैकिंग हो रही होती थी.
एक तरफ स्टोर होता था, गेट बहुत बढ़िया हो जाता था, एक जगह गाड़ी लोड हो रही थी। लेकिन अब मैं देखता हूँ पिछले 5 सालों में 6 सालों में ये बदलाव आया है। एवरीबडी इज क्रिएटिंग अ मॉकअप और शोरूम and at least 10 to 15% area is being decorated in furniture factories to create that experience. The same goes with the trade laminate और बाकी चीज़ों को डिस्प्ले करता है, लेकिन अब तक मैंने एजबेंड के डिस्प्ले पे तवज्जो नहीं देखी है या सॉलिड सरफेस का वो देखा नहीं है बहुत ज़्यादा प्रिविलेट। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपने वो सोचा हो या किया हो, हमने ना देखा हो, बट लार्ज पार्ट वी आर स्टिल मिसिंग इट। द पॉइंट वेरी वैलिडली पॉइंटेड, REHAU offers an opportunity, learn from their experience center how the materials can be displayed, meet with them, and I think start displaying many other materials which are not yet being displayed. Thanks Bhawna for adding value. सर मैं आता हूँ अब हमारे 2 अदर साइड के, मिस्टर सुरेश गोयल फ्रॉम USP Trading associated with REHAU since beginning, and same goes with Mr. Ashish Kakar. You are also a very close associate and buying materials from REHAU, right? अब तक आप लोग की जर्नी कैसी रही, पहले सुरेश जी बता दें। बहुत बढ़िया रही जर्नी। वी आर एसोसिएटेड विद, वी आर देयर परहैप्स देयर ओल्डेस्ट डीलर्स, वी बीन एसोसिएटेड विद देम। ओल्डेस्ट मतलब आपको भी 26-27 साल हो गए? 25 साल से ऊपर हो गए। वाह भाई 26। तो यू स्टार्टेड और फादर? माय फादर स्टार्टेड द कंपनी एंड आई वाज इन्वॉल्वड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, so it's been 24 years, very eventful, memorable journey. तो 2 चीजें अगर पूछनी हो आपसे, हाँ, 2 अच्छी बात बताइए और 2 कड़वी REHAU के बारे में। सर दोनों ऑनेस्टली बताइएगा। हाँ जी, नहीं अच्छी बात तो बहुत सारी है, तो इसलिए बताना आसान है। डिप्लोमेटिक और नहीं डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं, ना ही मैं हूँ डिप्लोमेटिक। एक तो one is their quality, you know, I mean to say, and just to add quickly here, I am an architect by profession. हाँ, so right from the beginning, quality, we always gave a lot of emphasis to quality. Even my father is an engineer, and so we are all from professional background. हीरे की पहचान आपने बहुत शुरू में ही कर ली थी। हाँ जी, बिल्कुल। So without exaggerating, I mean to say, we were always wanting to associate with a company which is in quality products. So there is no question about quality. It is the best in India, and I guess worldwide it is the best. It is the best. And second thing is, can I say 3 things? और एक वो negative वाली एक कम कर दूँगा। क्वालिटी का तो पहला हो गया क्वालिटी। पहला हो गया क्वालिटी। Second is their range. Product you range know, और product range. The number of colors. The number of sizes, they are matching with almost every laminate which is there in the industry right now. They are always, you know, abreast with whatever is the latest trend in the market. So second is their range, unmatched is that is there, and third is they are always, you know, ahead on the curve. So कुछ नया लाते हैं, कुछ नया इनोवेटिव जो ऑलरेडी फ्यूचर में होना है और व्हाट इज गोइंग टू कम टू इंडिया। आई मीन ट्रेडिशनली ट्रेंड्स माइग्रेट फ्रॉम यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज टू इंडिया, सो यू वुड गेट द लेटेस्ट with REHAU. This is what, whether it is the color or the product, you know, new products, new laminates, so they are always ahead of their competitors in that sense. तो REHAU की 3 स्ट्रेंथ सुरेश जी ने बताई, क्वालिटी, रेंज और तीसरा क्या था? ahead of innovation. और इससे कन्विंस होकर 25 साल से बिल्कुल साथ बिजनेस कर रहे हैं। एंड व्हाट विल यू एडवाइज टू द अदर ट्रेड पीपल? व्हाट इज योर एडवाइस टू अदर ट्रेड पीपल? So you don't have a competition with REHAU. Oh, so you have to be with REHAU. You have to be either होता ना, either be with REHAU or stay out of the market. competition. अच्छा, आशीष जी आपसे मैं ये पूछूंगा, यू आर पर्टिकुलरली इनटू फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, लार्जली मॉड्यूलर एंड मोर फोकस्ड ऑन ऑफिस फर्नीचर साइड। ओनली ऑफिस फर्नीचर साइड। सर ऑफिस फर्नीचर साइड वाला कंपटीशन बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, जैसा हम देखते हैं। पीआई लड़ जाती है और वहाँ पर प्राइस टिकता है। ऐसे में आप REHAU जैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट को लेकर जस्टिस कैसे कर लेते हैं? लोग तो बहुत सारे एजबेंड लगा लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल का जवाब ये है कि देखिए हर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। आप अपने आप को कहाँ पोजीशन करते हैं? वेयर यू पोजीशन योरसेल्फ। अगर आप, देयर आर पीपल हु विल नॉट पे यू, देयर विल बी पीपल हु
आप जो भी करेंगे फाइनली आप किसी भी यू नेगोशिएट द प्राइस विद द कस्टमर, आफ्टर दैट ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू थिंक यू आर गोइंग टू डिलीवर हिम गोल्ड ओनली ना, यू कैन नॉट से कि दैट यू बाद में तो जी आपने पैसे इतने दिए थे एंड आई हैव टू सप्लाई यू दिस, सो दैट्स वेरी क्लियर, यू हैव टू also have an ability to say no to a customer, we sorry we don't do this, उठ के आ जाना, तो वो तभी possible है if you are whatever you are offering to the customers is wide, you are whatever you are delivering is to his satisfaction. तो so रेहाउ से क्या क्या लेते हैं आप, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट इनके ज्यादा यूज करते हैं आप? मेरी जर्नी रेहाउ से बहुत पुरानी है, मतलब आई तो स्टार्टेड व्हेन करंटली वो मतलब आई थिंक भीगा जी में कहीं ऑफिस होता था. 25 साल आपको भी हो गए? ज्यादा हो गए. मतलब जब ये आए तभी से आप छोड़ गए? मतलब व्हेन रेहाउ केम टू इंडिया एंड दे हैड अ लाइजन ऑफिस आई थिंक राइट 1997. So and I cannot forget that conversation which I had with I think Mr. Ajay Khurana the. Yeah. I had this conversation with Mr. Ajay. And I searched, somehow figured out REHAUs in India, and since I traveled and I knew Edgebands kon. So you started then? I started modular furniture business in November '94. You are a veteran. I don't know what to say. I was a young man. तो उसका आंसर मुझे नहीं मिला कि आप वो बैलेंस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपको ये लगाना ही है और जिसको लेना है वो ये लेता ही है. मैं इसे ऐसे समराइज करूं? कस्टमर तो बड़े तरीके के आते हैं, तो हमें कहाँ अपने आप को एक बारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज वेरी हाई. द मोमेंट आई से माय प्रोडक्ट इज मैंने कुछ डिलीवर कर दिया और वो ठीक नहीं है, तो कस्टमर को तो मैं नहीं कह सकता ना कि मैंने आई हैव पुट समथिंग व्हिच इज नॉट अप टू सैटिस्फाई. आई कैन नॉट टेक अ चांस. मुझे तो प्राइस सेटल होने के बाद आई हैव टू पुट समथिंग व्हिच एंड आई कैन नॉट हैव टू मेनी कंपनीज विद इन माय सिस्टम. कलर मैचिंग है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. तो बहुत पते की बात है, प्रोबेबली ये अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज टू हाई. इफ यू सेव 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया यू कैन, बट अगर 10 प्रोजेक्ट में एक जगह का कुछ पोर्शन भी आपने रिप्लेस किया, देयर इज अ बिग कॉस्ट टू इट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज टू हाई. हाउ मेनी पीपल यू अंडरस्टैंड? आप अपने आप से पूछिए, लेकिन एक लेसन यहां पर साफ है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट फर्नीचर में गुडविल को भी ट्रबल करती है और प्रोडक्ट को भी. और आपने एक बात और कही थी कि आई एम इन अ हाइपर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ कस्टमर. आई हैव टू डिलीवर व्हाट आई हैव कमिटेड एंड आई कैन नॉट हैव सेम कलर्स फ्रॉम टू कंपनीज. मेरे को तो वही आई हैव टू यूज मटेरियल्स व्हिच आर कंसिस्टेंट टू माय मशीन्स, माय entire setup. It's not easily, you cannot change something midway. और मैंने आपको मेरी जहाँ तक मेरी जर्नी है तो उसमें तो मैंने तो ये तो PVC Edgeband कह रहे हैं, इससे पहले जाता हूँ तो we've used paper melamine tapes also, which nobody would remember. Then I've used my journey is that यहाँ पे समझाना मुश्किल होगा, किसी को समझ नहीं आएगी. मैंने तो समझ सकता हूँ. मैंने तो रोल्स लेके PVC के उनको काट के भी टेप लगा के भी फर्नीचर बना. तो मैं तो उस जर्नी का आई हैव रिमेन्ड. अभी आपकी सर फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में. तो हमारी तो वी हैव सीन दैट पार्ट. एंड व्हेन मिस्टर अजय खुराना, जो मैंने बात अभी कंप्लीट नहीं की, सो जब हमने व्हेन आई स्पोक टू हिम द थिंग ही आस्क्ड मी, डू यू नो व्हाट एजबैंड इज? आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू. सो वो सवाल भी उन्होंने मुझसे किया था. So that is how my journey. And आज की चर्चा में मुझे I met Suresh after a very long time, and he told me, in fact, पहला बिल इनका ही कटा था. He was my first customer. So that is my journey. Yes. And there's not one guy. I have at least 5-7 companies who have met me and said, "Sir, पहला particle board का बिल आपका कटा था." आशीष जी वेटरन है और एजबैंड तब से कर रहे हैं, रेहाउ से तब से जुड़े हैं जब वो कंपनी यहाँ आई और जब बहुत ज़्यादा ये नोन प्रोडक्ट नहीं था. His faith is still on and more better, more rigid. अच्छा ही लगा और वो इसलिए क्योंकि he knows the price and value consistency fetches. Consistency is the key to success. और आज आप उनके चेहरे का तेज देखिए आशीष जी के, कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी ही है जो इस हाइपर कॉम्पिटिटिव मॉड्यूलर फर्नीचर ऑफिस सेगमेंट के मार्केट में तेज दे रही है. थैंक्स टू. और एक इसमें बात है, ट्रेड में बहुत कम लोग हैं जो इतना लंबा स्पैन
एक इंडस्ट्री कर सकें। और बहुत कंपनीज जो हमसे अच्छा करती थी आई और खत्म हो गई, और मनीष जी को पता है उनका नाम भी, पर आज भी हम टिके हुए हैं because we have क्योंकि आपने हमेशा क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन को ध्यान there दिया। is so much effort we have to put in to execute, so it is not, it's easier said than done. The customer has so many options. When we came early there were hardly any players. आज तो it's like every street has a player. मेरे अपने कम से कम people who worked with me and started their unit Yes, 10 होंगे कम it से is. कम। Yeah. People, so इसलिए and I always have encouraged them कि यार अब you start a unit, क्या the more number of players, so I have always believed in that you must deliver the best what you can. आज के इस सेशन में थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि इंटरनेट एज यू नो ऊपर नीचे चल रहा है, बट एक बात साफ है, कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. रेहाउ हैज जस्टिफाइड एंड सेटिस्फाइड टू देयर क्लाइंट एंड ऑडियंस एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स, क्योंकि वो खुद ओरिजिन यूरोप से है, सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी उनके प्रायोरिटीज़ में है. और जैसा कि आज हमने मिस्टर राफेल से सुना, इंडिया हैज़ स्टिल रूम टू ग्रो इन क्वालिटी टर्म्स. इट्स अ बिग मार्केट, मेच्योरिटी हैज़ टू हैपन. सेम चीज़ भावना जी ने कही, RSP डिज़ाइन, दैट फॉर बीइंग अ डिज़ाइनर quality has room and they look for quality, they look for range, they look for application showrooms. She added very valid point कि showrooms की ज़रूरत है. भले हम डिज़ाइनर्स के पास समय कम है, लेकिन हमारा जो कंज्यूमर है जो बहुत हार्ड अर्न मनी लगाता है, उसको वो फीलिंग चाहिए और वो तभी बेटर डिसीजन लेता है जब वो डिस्प्ले में एप्लीकेशन दिखाया जाए और उसे समझाने का तरीका प्रॉपर हो. शी कॉन्ग्रेचुलेटेड रेहाउ फॉर दिस. मिस्टर फैज, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेहाउ इंडिया, he said that to serve the industry, to serve the trade, to have more wider basket in price range, they have acquired a company Red Star in southern India to serve in a deeper market, rural market, semi-urban markets, so that they can cater to every category. At the same time, Mr. Sunil, he added, last 25 years journey with Rehau has been fantastic because the company is doing what they believe to, and at last, as you all know him, the face in India for sales and market, Mr. Manish Arora, veteran है, knowledge बहुत है और सबको पर्सनली जानते हैं. I must congratulate all of you for speaking your heart. कुछ और बोलना हो तो फटाफट एक मिनट में सब लोग कह दें. Mr. Rafael, I thanks a lot for expressing high words for our country, and I feel so proud today. I'll invite once more in future so that I can compare Indian market and global scenario, and क्यों सर सही रहेगा ना, to educate the market. And thank you all for today's program. Anything that you want to add, do let us know. बताइए, किसी को कुछ कहना हो? नहीं, हमको just we want to thank our customers, our dealers, our OEMs who has been associated with us for so many years, and we can reinforce actually that we will exceed the expectation what you have been experiencing with us. और अब ये हैं तो हम हैं, इनकी एग्जिस्टेंस है तो हमारी एग्जिस्टेंस है, और आगे की जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ट्रेड हैं, उनके लिए हम नए नए प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द राइट प्राइस लेके आते रहेंगे. ये हमारी कोशिश रहेगी. और धन्यवाद प्रगट जी आपका बहुत बहुत, PLY रिपोर्टर का. आपने आपकी टीम ने टाइम निकाला, हमारे शोरूम में आए. हमारा तो काम है, धर्म है, वी आर सो कमिटेड कि हम कितना नॉलेज फैलाएं. अगर आपने PLY रिपोर्टर को करीब से देखा होगा तो हमारी और रेहाउ की जर्नी शायद आगे पीछे साथ साथ ही है. वी आर ऑल्सो 24 ईयर्स ओल्ड कंपनी, एंड हमने एक ही मिशन बनाया हुआ है, एजुकेटिंग टिल द एंड, कोर. और वो पागलपन की हद तक करते हैं, और इसीलिए हम लोग शायद आपसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं. और मनीष जी, once a salesman always a salesman. God was a salesman. चलते चलते उन्होंने मौका नहीं छोड़ा, बोला थैंक यू कस्टमर्स. But Manish ji, people should learn from him how committed one has to be on screen or off screen, how dedicated one has to be. आपसे हमेशा कुछ सीखने को मिलता है. थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच सर. आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए. For us for this session. हमने कभी भी रेहाउ को अपने बियॉन्ड, हमने तो फैमिली की तरह ट्रीट किया जी.
The people who have worked with us for when they were young and now they are like in मैं their समझ 50s. सकता हूँ भावना। तो वो भावना जी साथ हैं आप it's been a good journey till now और अच्छी रहे, इससे और अच्छी बने and ये शेयर दिस वैल्यूएबल इनपुट। इसमें कुछ आपको कहीं दिखे कि थोड़ा मार्केटिंग हो रही है या थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन असली देखिए मुद्दा, दूध में मलाई थोड़ी ही होती है, पूरा दूध मलाई नहीं होता, उसके लिए बड़ा घिसना पड़ता है। तो छोटे टाइम में जो हमने बताया उसमें मलाई देख लीजिए। पहला, क्वालिटी के लिए रूम है। दूसरा, भाई साहब मतलब मिस्टर राफेल ने कहा इंडिया इज ग्रोइंग अ लॉट फास्टर एंड इवन सो फास्ट दैट ही विल इन्वेस्ट इन इट। सर ने कहा इंडिया बहुत डाइवर्स मार्केट है एंड रेहाउ इज कमिटेड, यानी आप भी डाइवर्स मार्केट को कैटर कीजिए, जैसे ये एक्वायर कर रहे हैं वैसे आप भी स्प्रेड कीजिए। मनीष जी ने कहा हम अपने कस्टमर्स के लिए बिछे हुए हैं, समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, हम बेस्ट क्वालिटी देते रहेंगे और रेंज भी देते रहेंगे साथ साथ में, यानी हम छोड़ेंगे नहीं। भावना जी ने कहा दे नीड टू बी एजुकेटेड फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एन आर्किटेक्ट नीड कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड इनोवेशन, यानी आपके लिए भी संभावनाएं हैं। सर ने कहा कि कंसिस्टेंसी में ही हम जीते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत आए और बहुत गए। हम आज तक इसलिए टिके हैं क्योंकि हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी गिनते हैं। अगर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं गिनते तो शुरू कर दीजिए। और सुरेश जी ने कहा दैट वी आर आर्किटेक्ट्स ऑल्सो एंड माई फादर वॉज एन इंजीनियर, 25 years has been fantastic. He will not leave this company because they are sticking to what they have been promising. Today's show, I Pragat Dvivedi signing off. Thank you very much. Keep sharing. कुछ भी खराब लगे सीधा लिखिए उसी पर, ये गलत बोले, कुछ भी अच्छा लिखे तो शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।